Today's machine we're going to try is called Frisitileak. You can see over here, which is a vulnerable machine, and we have an IP address which is 192.168.0.114. So over here you can see the interface of the machine. It's saying Frisitileak, motto, keep claim and bring Fristy, and it's an year of 2015 over there. So basically जो आज की जो machine है उससे पहले अनमैप कर लेते हैं बैक एंड साइड में. $114. So over here we have the word list. We have interface, keep, claim and bring Fristy. So first of all, it doesn't know what is Frisitileak over here. So यहाँ पे दे रखा है आपका Frisitileak motto. So we are redirected to the website of Twitter account, you can say. Samsung India calling all Galaxy fans. So normal thing. Escape room, Frisitileak, cyber security. Enjoy Frisitileak, my friend. Next time, gadget. Next time. Okay. So over here, जो हम basically देखो तो यहाँ पे normal websites दे रखी है, आपके aliases दे रखे हैं और आपके websites के नाम. So सबसे जो important है यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे identify करना है आपके services को. So Nmap has completed, and what I can see, there is only port number 80 is open there, which is Apache HTTP 2.2. So over here, the most important part जो हमें यहाँ पे देखना है, वो हमारे कौन-कौन से services चल रहे हैं. तो मैं अगर services की बात करूँ तो यहाँ पे आपका CentOS दिखा रहा है, Dev Server 2 दिखा रहा है, और आपके number of devices, PHP 5.3. एंड यहाँ पे जो दिखा रहा है आपका robot.txt जो आपका फाइल होती है वो आपके क्रॉलर्स के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन सी डायरेक्टरी अलाउ एंड डिसअलाउ डायरेक्टरीज है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे तीन चीजें दिखा रहे हैं, कोला, सीसी एंड बियर. सो व्हाट आर एक्चुअली दीस थिंग्स? लेट्स सी one by one. So let's try Cola. This is not a URL you are looking for. Let's see the source code, and this is a normal image file. Let's try CC. No, nothing over there again. Let's try with the word Cola. Again, I can see there is nothing. So let's try backend side. Nicto भी try कर लेते हैं. -h. Let's try to identify any of the services which is running over there in the backend. And over here, I'm going to do one thing. I'm going to create a dictionary with the help of Quill Kali Linux. Quill is basically used for creating some word lists from a website. So you can see Quill is a Ruby app which Spider have given URL to specify depth, optimizing the following external links, and written all the list of words which can be used for password cracking, such as John the Ripper. Quill is also associated with the line app, you can see. So we're going to create a word list with the help of Quill. So अगर आप यहाँ पे देखो, I'm going to use let's see the command. So we're going to use Quill -d, -m, and -w. So what is -d stands for? -d stands for depth, means the spider, the crawl to identify. M stands for minimum words or the length, or you can say default 3. So they are using 2, they are using 5. -w stands for your word list. -w is for your word list to save and the specific URL. So over here, we're going to use the Quill command to make a dictionary over here. So I'm going to copy this one. So Nicto didn't find nothing. So let's use Quill.
-d, depth of 2, -m, the minimum words, -w, take a word list of this. Let's store it in the root desktop and the URL. So I'm going to copy this one. Sometimes it's good for creating your own words, and we can see that the scan has been done because it was on a big dictionary, and you can see the doc file, which contains welcome, Frisitileak, quick. ये doc वाला आपने सर डाउनलोड किया है क्या? ये पहले से आपके डिक्शनरी में होता है आपके लिनक्स में. Okay. So you can see all the words: welcome, Frisitileak, quick, hackme, special, Frisitileak. There are lots of words over here one by one. जिसमें मैं काम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जब robo.txt डाला था हमने, so यहाँ पे कुछ वर्ड्स जैसे कोला, CCNPR, तो हमें ये पता है कि ये कुछ नॉर्मल था आपका डायरेक्टरी के लिए. So मैं यहाँ पे जो यूज करूँगा, मैं इस डिक्शनरी में एक और वर्ड दूंगा जो कि यहाँ पे फ्रिस्टी दे रखा है, क्योंकि फ्रिस्टी भी आपकी एक ड्रिंक्स है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रिस्टी is also a drink, a soft drink, just like a cola, CCNPR. So यहाँ पे डाल देते हैं फ्रिस्टी. So I'm going to use this dictionary. So for that case, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? Let's use Webalizer also. So we're going to download the Webalizer from the web. So over here, you can download the browser extensions from Mozilla, add-on, it's over here, disable or enable, preference, we can see. Okay, so I have an issue with my Webalizer over here. It's not showing me the Webalizer over here. No, not an issue. So instead of Webalizer, I'm going to use WordWeb. WordWeb, -v, verbose, and the IP address. So through the WordWeb, we can identify what other services are running on the specific server. So I can see there's a web dev server, web-based distribution authoring and versioning, which is version 2. PHP version is 5.3.3. CentOS version, we can see it's the CentOS with the Apache version 2.2.15. And we can see it's an Apache over there. But the most common thing, I'm going to use the PHP. So it's running a PHP server. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे Doorbuster चलाऊंगा to identify the directories. So what we're going to do, we're going to copy this URL and we're going to paste it over here. The number of threads according to this. And we're going to provide our dictionary that we created. So over here, this recursive बता देते हैं, PHP की website है, चलो start करते हैं. So अगर आप यहाँ पे देखो डिक्शनरी में, so यहाँ पे फ्रिस्टी दिखा रहा है 200, images दिखा रहा है 200, icon दिखा रहा है 200. So there means there are some directories on the server side. जैसे कि image की directory में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. Let's open this one. It's a normal directory page. Let's try to see the icon. This is also, you can see all the Apache icons in it. This is a normal thing. And you can see there's another, which is your Fristy 200.
So let's open this one. And over here, we can see that we have a login page of Frisity. Welcome to the Frisitileak admin portal. See. So when you are simply enumerating the directories of on a server, try to use Quill. It will make some dictionaries according to your own server that can be helpful for later part. Or you can use WC to count the word count length, -n length. WC is a command which is basically used to, you can say, count the number of list directories. So if you see, I'm going to use the WC in my Word document word. So WC word count, -n length, and the file. So they are around 36 words. See. So the most important part you can see over here that we have a login page of Frisitileak admin portal. With the help of Turbuster and with the help of Quill, we created our own dictionaries to perform a brute force attack. So this is also a major part to understand or written it down. Perhaps we can try different kinds of word lists, but the word should be over there on the specific one. तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रखा है, यू नेम एंड पासवर्ड, बट according to the nmap scan, there was only port 80 was open. So what we can do over here, we can try to, if I am a good pen tester, if you have a good logic of web application, you can try one-on-one query. 1 is equal to 1, minus space. Username and password is wrong. First of all, जब भी आप SQL injection find out करते हो, so remember one thing कि check करो कि वो vulnerable है SQL injection से नहीं. No. If you try the single code also, it will not work. So इस वाले जो वेबसाइट, ये जो CTF है, इसमें आपके सोर्स कोड में भी आपको रीड करना चाहिए. हर एक सोर्स कोड के अंदर आपको कभी-कभार misconfiguration services दिख जाती है, misconfigured services. So over here, let's do right click, view source page, and over there, अगर आप highlight पे सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे description दे रखी है. Content type में देखा है super lit password login test page. We use base64 encoding for the image, so they are in line in the HTML. Let's read this one carefully. This is a message over there. Sometimes developer pastes some messages on the back end of the source, and they forget to erase those things. Super late password logging test page. We use base64 encoding for image, so they are in line in the HTML. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, I read somewhere on the web that it's a good idea to do it. So उन्होंने एक मैसेज दिया है कि इन्होंने एक पासवर्ड को, एक इमेज फाइल को base64 encoding में सेव किया. जैसे कि यहाँ पे to do list में दे रखा है, we need to clean this up for the protection. I left some junk words in the making of test easier. By the user exips. You can see the exips word. So सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने base64 इमेज फाइल को वो क्या एनकोड किया. और अगर आप यहाँ पे देखो, इमेज सोर्स कोड यहाँ पे दे रखा है, इमेज सोर्स कोड base64 देखो. See, this is a proper word of your encryption standard. देख रहे हो? But see, in the last line, I can see all the words are okay, but compare this one now. They are simply repeating the same word. And in encryption standard, we never use the same words in our upcoming lines over there. So it's not it is a false junk word as per the data they have given. This was a junk word. I left some junk in the making the testing easier. The username is exips, you can see.
and the actual base64 encryption code was over here. See, this was the actual encryption base64 encoding encryption. So we can copy this one, but over here we have to do one thing. We have to make it an image file. So बहुत सारे तरीके हैं कि आप इस इमेज फाइल को अपने काली के लिनक्स में अंडर भी कर सकते हो या आप कुछ अलग टेक्निक यूज कर सकते हो. जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, you have to figure out how we can break this one. This is an image file of base64. We have to try one by one all the things. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे के पूरे डेटा को फाइंड आउट करना है. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे काली में टर्मिनल में करके दिखाऊं, वी कैन ट्राई दिस वन ऑन काली टर्मिनल. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सीडी मतलब सीडी डेस्कटॉप में चलते हैं, and I'm gonna make a touch. I'm gonna make a file with the touch command, and I'm gonna name this one decode base 64.txt. तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे decode.txt फाइल बन चुकी है. So let's open this one. I'm gonna use nano editor, and I'm gonna paste the entire encryption standard code on that. तो इसको आपको क्या करना है, ये आपको पूरे के पूरे base64 का encryption standard को आपने यहाँ पे सेव कर दिया है. So x right. अब मैं इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं. Yes, the base64 encryption statement over there properly as per the data. So what I'm going to do, I'm going to use some my Kali Linux command. I'm going to change the medium. So cat, the decode part, the pipe command. Pipe command क्यों? Because मैं एक अलग सा एक command ऐड करने वाला हूँ, जो कि आपका base64 को मुझे decode करना है. base64 decode, और उसका जो आउटपुट होगा वो मैं ये सेव करूँगा रूट डेस्कटॉप में, और इसको नाम देते हैं output.png. Let's see. तो इसको ऊपर करके देखते हैं. See this one. This is a proper method that you can use. कमांड को simply understand करोगे मैंने किया क्या है. ये पहले से decode था, वो encode था. मैंने उस encryption standard को एक text file में डाला था. Then I simply use the base64 standard, जो कि इसका standard था, type था, और मैंने यहाँ पे use किया था -- decode part, और उस proper file का एक simple path दे दिया था. Otherwise, you can simply use online Google base64 image decoder. Compare this one with this. They're the same thing. बस फर्क इतना सही है कि मैंने इसे टर्मिनल पे डिकोड किया था और इसको मैं एक वेबसाइट के थ्रू डिकोड कर रहा हूँ. Or otherwise you can simply check is this is a proper file or not. File type यूज करके फाइल टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सा टाइप का फाइल है. तो अगर आप यहाँ पे देखो ये इमेज फाइल टाइप है और उसका पिक्सल दे रखा है यहाँ पे. So what we can do over here, we can try to gain lots of other things. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो उन्होंने बोला था कि ये आपका एक पासवर्ड है सर्वर साइड में. This was a password on the server side. So we can use different kinds of techniques to bypass this one. So in this scenario, what I'm going to do, I'm going to write this password on the login form, जो कि user मैं क्या डालूंगा zips. Sometimes the developer stores sensitive information in the backend of the source and they forget to delete it. So let's write zips. So the name was, okay, I'm going to copy this one.
And the most important part is the image file. So let's write it on a text box. So it was small k with the e with the k. Let's try with this one. And we are in. This is all about to gain information in the backend source. It's all about to get the identification on the server side. कि सोर्स कोड में भी कभी कभार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकल जाता है जो कि आपके हार्ड कोड होते हैं, एनकोडेड होते हैं, बट यू कैन रिवील दोस वन इन अ नॉर्मल फॉर्म. So successful login, and we can see upload file. Now they have given select image to upload. So what we can do as a pen tester, I'm going to use file upload vulnerability. Let's use medium. What is unrestricted file upload vulnerability? What we can do with this, and what types of filter and bypass techniques. What is file upload vulnerability first of all? File upload vulnerability is a major problem with web-based application in many servers. This vulnerability depends entirely on purpose. What kind of purpose that can we do it? Attackers allow an attacker to upload a file on malicious code. See, this is the purpose of the attack. To execute on the server, an attacker might be put a phishing page into the website or deface the website. Attacker may reveal internal information of the web server or other in the chance to send sensitive data. What we can do with this? We can achieve remote code execution with the file upload vulnerability by uploading PHP shells, and we can achieve XSS, LFI, and XSE and phishing files, and some of escalation also. So remember one thing: when you are uploading a file system, try to check one by one all the things: PHTML, PHP3, PHP4, INC. These are the extensions that you can use for file upload or bypassing the file. So in my case, what I'm going to do, I'm going to upload a file, and you can see the video also they have made on the paper. So let's see to upload a normal file. So the file has been uploaded over here. See, 192.168 Frisitileak do upload.php, and you can see over here, uploading, please wait. The file has been uploaded on the upload directory. It's on the upload directory, we can see properly. So what I'm going to do over here, I'm going to upload a PHP reverse shell, and I'm going to take the reverse shell from the pentest monkey. Pentest monkey reverse shell. So we're going to download the PHP reverse shell over here. So you can download this one from here. Otherwise, I already have my PHP shell. So what you have to do on that, you have to change the IP address of your own and the port number you have to assign, because the connection will be executed and it will revert back. So we can upload a shell.php file on the server side. Let's check if we upload this one. Browse, downloads, tools, PHP shell. Sorry, we are not validate. Only uploaded file are PHP, JNG, and GIF file. Now what we can do? We can try the restriction method.
We can try PHP3, PHTML, PHTML4, or PHP5. Let's try with the most common thing, PHP3. No. PHP4. Nope. PHP5. Nope, it's also not available. So let's try double extension. Sometimes a web server is confused to execute which should be to execute in the first way. So what I'm going to do, I'm going to turn it in PHP. So ये जो attack है, this is also known as double extension attack, to simply confuse the web server to think about this is a PNG file, but over there it's a PHP also. So it will execute both of the extension on the server side. Let's see over here if we can execute. The file has been uploaded successfully. And we can see that the file has been uploaded on the uploads directory. And we were using the php.upload, which is an extension. So what are we going to do? We're going to use the extension, which is your uploads directory. But what are we going to do? We're going to try to activate our listener. So for that case, I'm going to use netcat numeric listening verbose port, and the port number that we're going to use is 4448 for the netcat connection. And for this scenario, I'm going to write my shell name that was a complete name, which was this, and I'm going to execute this one. The PHP file upload vulnerability is also most of the common thing when an attacker simply gained RCE execution part, remote code execution. Remote code execution part. So you can see we get a proper shell. A proper shell of the server to gain unauthorized access over there. So note it down all the vulnerabilities which is guided over there. You have to make a proper report writing on the each and every vulnerability that you have found till now. So the most common thing you can try is to gain unauthorized access or unsensitivity part. For this scenario, we can see that we have a proper shell on the server. So after the gaining access, what we're gonna do? We're gonna try to get a post-exploitation phase. Post-exploitation phase where we're gonna look for each and every directories and find some relevant data over there. So my major concern would be to check each and every directories if we get over there. So let's see where we are. We are on the root directory ls-all. Yes. So we are on the server side, but we are having a shell. So let's use milk and Payatu. So we're gonna get a shell. So I'm gonna use a Python over there. So what I'm gonna do? Is it Python available? Yes, Python is available on the server side. So we get a TTY, a terminal of bash. Okay, that's great. So what we're gonna do over here, in this new machine, there is a one kind of vulnerability that is gonna introduce you. That is your that would be your exploiting pseudo executables, and it would be a new attack, and that would be your in this machine we're gonna learn about
Sudo executable, which stands for set user ID. It is a Linux feature that allows user to execute a file with the permission of specific user. किसी और यूजर की परमिशन के थ्रू हम उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम परमिशन प्रॉपर ले सकते हैं. For example, the Linux ping command typically requires a root permission in order to open a raw network socket, a normal packet. By marking the ping program SUID, which is the owner as the root, ping execute with the root privileges anytime in the low privileges user execute the program. You can see XRBS, जो मैंने आपको first day पढ़ाया था, जो यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, S stand for set user ID. तो अगर आप लोगों को याद हो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो हम चेंज मोड करते हैं, चलो cd desktop, I'm going to make a file which is partho. So we have partho over there. This is partho, a normal file. So मैं इसको permission देता हूँ कि change mode 755. 755 क्या है कि फर्स्ट वाले को इसमें रूट राइट एंड एग्जीक्यूशन है और सेकंड वाले को यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूशन की परमिशन है और चौथे वाले को भी, तीसरे वाले को भी. तो मैं किसको दे रहा हूँ? पार्थो को दे रहा हूँ. अब देखते हैं. बट आप जो यहाँ पे डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को जिसमें ये एप्लीकेशन रन करे, तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एस की परमिशन होती है. और ये जो डिफाइन होता है ये हमारे सर्वर साइड से डिफाइन होता है. SUID is a feature that when used properly actually enhance the Linux security. This problem is mighty administrator made unknowingly, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है. The SUID configuration when they install third parties application or the make logical configuration changes. A large number of system admins don't understand and where to set the set part and where not. Set user ID bits should not be especially on the any file editor, or the attacker can overwrite any files on the system. See, so the best place है इसको understand करने के लिए SUID hacking articles. So यहाँ पे जो मैं बोल रहा था आपको, फर्स्ट जो आपका यूज होता है यूजर के लिए, दूसरा होता है ग्रुप के लिए एंड तीसरा होता है अदर्स के लिए, जिसमें आपके 7 बिट्स होते हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, when special permission given to each and every library SUID, GUID and sticky bits, when extra 4 bits is set to the user owner, it becomes SUID bits. For example, यहाँ पे ज्यादा अगर आप देते हो 4 से ज्यादा, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट बिकम्स SUID ग्रुप GUID. आप परमिशन अगर यहाँ पे देते हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है 4755, तो ये एक स्पेसिफिक यूजर से चल रहा है एप्लीकेशन. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पार्थो को यहाँ पे एक और बिट ऐड कर दूं 4, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए. पार्थो इज नाउ a set user ID which is running as super user, जिसमें लोकल यूजर को भी परमिशन है. देख रहे हो? तो अगर ये पार्थो में कोई भी एक नॉर्मल फाइल डाल दे, कुछ भी डिजास्टर फाइल डाउनलोड कर दे, तो it will execute as a root permission. But I'm going to remove this one because I care about my system. So यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 4 बिट की बात हो रही है, यहाँ पे फिर से आपकी रीड की बात हो रही है. टोटल बिट यहाँ पे कितने हो रहे हैं आपके? टोटल आपके बिट्स हो रहे हैं 11, 21, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सर्विसेज बैकएंड में सुपर यूजर के साथ चल रही है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू यूज फाइंड पैरामीटर -u and del. It prints the executable which is having sudo bits user. जिसमें अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फाइंड पैरम USR टाइप तो दे रखा है. इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फाइंड पैरामीटर. जो फाइंड हमारी एप्लीकेशन होती है वो हमारी एग्रेसिव स्कैन के लिए यूज होती है.
// denotes starting from the top of the root folder. -params denotes search for the permission that follow. Parameter, which is your UFNS. UNS stands for your specific folder or the file which is owned by the user root. जो आपका type है, type is a file which you are looking for. F denotes a regular file. 2 denotes the second file descriptor of the process. For means redirection or dev null, which is important, is a special file system object that throw away everything written in it. So we're gonna find the aggressive file SAM. So I'm gonna use this command and look for what other applications are running over there in the compromise server. तो अगर आप यहाँ पे देखो pin mount, fu user, unmount, su, ये सारे एप्लीकेशन चल रहे cron job. और अगर आप यहाँ पे देखो, these are also using the same thing. But ये अलग-अलग स्पेसिफिक यूजर के अलग-अलग आउटपुट शो करता है. जैसे कि सबसे पहले इस मशीन में जो है आपका, वो आप होम यूजर में जाके देखो, cd होम यूजर, वहाँ पे आपको suid बिट्स के बारे में और पता चलेगा, जिसमें आप यहाँ पे एडमिन डायरेक्टरी है और आपका ezips भी डायरेक्टरी है. तो चलते हैं ezips की डायरेक्टरी में. So we have lots of things over here, one by one: old bash logout files, settings, mkdir, cbs, cssid, chf disk, chcpu, change group, cut command. There's lots of things, and these are normal commands. A normal command that you use on the server side, on the application execution process. So यहाँ पे मैं अगर देखूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फाइल है जो कि आपकी रीड फाइल है, जो कि है आपकी node.txt फाइल. You can also specify with this one. See, these all are execution files, and we can see we have a node.txt files. Let's see what is over there. So they have a notice. As I made it possible for you to do some automatic check, but I did not allow you to access to the user bin directory, user binaries. I did somewhere copy a few extra often needed commands to my home directory, which is your change mode, your df disk format, your cat, echo, ps, process, grep, egrep, so you can use those from home admin directory. And home admin directory is a different user, as per we know over here. So don't forget to specify the full path of each binary. Okay, we have to specify the full path also. Just put a file called run this in the temp directory. Each line on the command. यानी कि यहाँ पे एक फाइल बोल रहे हैं कि बनाने के लिए कि अगर आपको स्पेसिफिक बाइनरी यूज करना है तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा उसका, और उस फाइल का पाथ क्या देना पड़ेगा आपको, उस फाइल आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा रन दिस में, जो कि टेम्परेरी फोल्डर में होगा आपका, और जो आउटपुट होगा वो आपका क्रॉन रिजल्ट में होगा. अब ये क्रॉन रिजल्ट क्या होता है अगर मैं बात करूँ, क्रॉन जॉब्स भी आपके सर्वर में होते हैं. क्रॉन रिजल्ट क्या होती है अगर मेरी बात करते हैं, क्रॉन रिजल्ट छोड़ के क्रॉन जॉब्स देखते हैं. What is Windows cron job? What do you cron job works? Cron job is a Linux utility which schedules a command or a script on your server to run automatically at a specific time and date. A cron job is a scheduled task itself. Cron jobs can be very useful to automate repeated tasks. एक स्क्रिप्ट में बैकएंड में आपकी स्केड्यूल हो रहा होता है, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट जो कि आपके हर एक टाइम यानी कि हर दिन एक बार स्कैन करो,
या हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो सिंपल आपके आउटपुट देता रहे। और यहाँ पे जो क्रॉन रिजल्ट बोला गया आपका, ये क्रॉन रिजल्ट आपके आउटपुट को सेव करेगा। उसने खुद ही अपने आप बोला कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन मेरी बाइनरी से यूज करना है तो आपको स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा, और उस पाथ को आपको किस में देना पड़ेगा, रन दिस के फोल्डर में देना पड़ेगा, जो कि टेम्प फोल्डर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसने मुझे चेंज मोड की परमिशन दे रखी है। सबसे बड़ी गलती, चेंज मोड परमिशन, यानी कि मैं पूरी की पूरी अपनी अथॉरिटी चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर दैट क्या करूंगा, और यहाँ पे इको कमांड भी है, तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इको कमांड से एक कोड रन करूंगा, जैसे कि उसने बोला था कि अगर आपको बाइनरी यूज करना है तो आपको स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे होम एडमिन यूजर, जो उसने बोला था कि होम एडमिन से बाइनरी आप दोगे, समझो इस क्वेश्चन को पूरा। तो मैं यहाँ पे उसके बाइनरी से चेंज मोड करूंगा, परमिशन चेंज करूंगा, और मैं क्या चेंज करूंगा, मैं अब उसके डायरेक्टरी को परमिशन दूंगा 4777, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट, जो कि ये कहाँ पे होगा, आपके उस सर्वर में होगा। और मैं परमिशन किसको देना चाहता हूँ, होम एडमिन डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए। और इस फाइल को मैं सेव करूंगा अपने कहाँ पे, एज पर द फोल्डर कॉल टेम्प, उसके अंदर एक फाइल रन दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा एक फॉरवर्ड स्लैश देके टेम्प करके और फाइल का नाम दूंगा रन दिस एज पर द इंस्ट्रक्शन दे हैव गिवन एंड हिट एंटर। कुल दूसरे क्या बोलता है कि ये जो आउटपुट है, क्रॉन जॉब की रिजल्ट है, ये अपने आप हर एक मिनट, इट शुड बी रन एवरी मिनट विद अकाउंट प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे क्रॉन जॉब्स का यूज हो रहा है कि वहां पे एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जो कि आपकी रन दिस कमांड है, जो कि हर एक मिनट में चलेगी। यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी परमिशन दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं बिन बैश इको कमांड से रिवर्स शेल भी दे सकता था, जो कि हर एक यूजर के परमिशन से चलेगी, जो कि एडमिन यूजर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सीडी टेम्प पे जाके देखूं, यस देयर इज अ रन दिस कमांड, और ये एग्जीक्यूट हो चुका है क्रॉन रिजल्ट के नाम से। और उसके अंदर क्या कमांड है देख रहे हो, एग्जीक्यूटिंग एडमिन मिनट, हर एक मिनट में चल रहा है ये, हर एक मिनट। तो मैंने यहाँ पे क्या परमिशन दी थी कि मुझे सिंपली चेंज परमिशन चाहिए उसके होम एडमिन डायरेक्टरी में, यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट, मैं उसे रीड कर सकूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसे क्लियर करता हूँ, सीडी होम डायरेक्टरी, अब इसको चेक करो कि जो एडमिन डायरेक्टरी थी उसमें यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई है। तो सीडी एडमिन and I can access that server easily over there without any interaction and any modification part. तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैश हिस्ट्री दे रखी है, चलो यही चेक करते हैं। Okay, there was nothing on the bash history. Oh, okay, this was bash logout. Sorry, it was not bash history. बैश अगर हिस्ट्री होती तो लास्ट टाइम के जितने भी इसने कमांड यूज किए थे, सारे के सारे कमांड्स मुझे यहाँ पे शो हो जाते। There are command like your cat command, your change mode command, your cronjob.py, cronjob.py. See this one. यहाँ पे इसने बोला था कि जो टेम्प में आपकी फाइल बनेगी, राइट फाइल देखो, राइट फाइल स्ट्रिंग में इसने दिया था टेम्प cronjob रिजल्ट एज अ फोल्डर, और उसने बोला था कि अगर वो ओपन करे तभी बनाना रन दिस। और जो कि ये बाइनरी आपका कॉल होता है होम एडमिन और यूजर बिन से, बट इसने यूजर बिन से परमिशन नहीं दे रखा था, होम एडमिन से दे रखा था। सो बैकएंड में अगर बात करूं, यहाँ पे क्रॉन जॉब आपके नॉर्मली बैकएंड में चल रहा है।
सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोल्डर दे रखा है script the password script.py, छोटा सा वो कर देते हैं। चलो script this password को देखते हैं ये क्या है। We have encrypted form data. Okay, we have last thing which is your Frisitileak code also. Let's check this one. This is also one command. So let's copy this too. So what are we gonna look over here? We're gonna look one by one all the things. So we have different. Let's remove this one and let's remove this one also. So we have two hashes. So what do these hashes means over here? Let's try to check in the background. So यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे एक और चीज है script.py, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। So कभी कभार आपके एल्गोरिदम्स दिए होते हैं वहाँ पे। See this one, import base64 encode.sys, और यहाँ पे एक प्रॉपर पाइथन फाइल दे रखी है आपकी जो कि आपके इनकोड कर रहा है वैल्यू को। देखो एनकोड स्ट्रिंग वैल्यू, एनकोड स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें आपका base64 एनकोडिंग हो रही है। base64 encode हो रही है आपके स्ट्रिंग कैरेक्टर में, encode the string value and then return the code to the row 13। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा एक बात करूँ, नॉर्मल सी बात है, तो उसने बोला है कि एक जो स्ट्रिंग वो एक हमारी कैरेक्टर्स होती है, यानी कि जैसे कि क्रॉ एक वर्ड है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्राम, यहाँ पे इसने एक एनकोडिंग स्ट्रिंग्स करी है, एनक्रिप्शन स्ट्रिंग यूज किया उसने base64 को। base64 जो सबसे पहला आपका वर्ड था, फिर वो अपना बेस स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ है, और स्ट्रिंग आपका कन्वर्ट हुआ है रो 13 में, यानी कि जो हमारे एनकोड हुई है यहाँ पे वर्ड्स, सबसे पहले जो base64 जो एनकोड हुई है वो आपकी स्ट्रिंग में गई है, कैरेक्टर्स में। उसके बाद ये आपका गया है रो 13 में, जो कि आपका एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ये आपका हो गया एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है तो आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि रो 13 को आपको रिवर्स स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और उस रिवर्स स्ट्रिंग को आपको डिकोड करना पड़ेगा base64 का। So let's try with the encryption standard। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं, तो ये जो हमारी फाइल्स हैं, पहले तो चेक करते हैं कि ये कौन सी फाइल्स है। So यहाँ पे मैं यूज करूंगा #identifier, not found। Let's try with the second one। Not found। So the best place to do this one is to check on Google। So I'm not going to look this one. This is all the walkthroughs over here. Let's see the code house. What is over there? The code house and the block has been shifted. We have given highlighting the code script. Okay. Frisitileak code. Okay, they have given the setup of Oracle. Recon. Okay, this is also your walkthrough, but I'm not going to use this one. We're gonna use code beautifier. Code beauty.
over here you can try lots of other techniques to decode, to bypass or to strings. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं. Because some developers are not programmers, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मोड में जाओगे तो मोड में तो कुछ और दिखा रहा है. सब लिंक्स, कोड ब्यूटीफायर, जेसन ब्यूटीफायर, यहाँ पे कोई रोड 13 का दे रखा है क्या? न्यू फंक्शनलिटी शाह, यहाँ पे रिवर्स टेक्स्ट. ओके, यहाँ पे रोड 13 दे रखा है क्या? एक मिनट देखते हैं. रोड 13 random by generator, encryption standard, roll the dice. Random tools, utility tools, basic for tools, SQL tools. Okay, IP tools. Okay, not this one. Viewers. Okay, so gaming logins, brands. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna look for on the Google road 13 decoder. Yes, so it was on the text road 13.converter file. See, this was I was talking about use. So सबसे पहले जो अगर आपको याद हो कि ये आपको रिवर्स स्ट्रिंग में करना है तो रिवर्स स्ट्रिंग, तो मैं अगर यहाँ पे रोड 13 देखूं, रोड 13 टू टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट में कन्वर्ट किया. अब जो टेक्स्ट है वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट इसी पर बेस 64 को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंड डिकोड. All you have to understand the encryption standard that they were using. That's it. Nothing else. Same आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, फिर टेक्स्ट को रिवर्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, फिर रिवर्स स्ट्रिंग को बेस 64 में कन्वर्ट करो. तो रोड 13 टू टेक्स्ट. Oopsie. Reverse string. Sorry, it was text receiver. और आपका बेस 64 की कोड. See, this is a swallow 1 2 3. This was then it could be a password of admin. जैसे यहाँ पे दे रखा था, ये था आपका फ्रिस्टी गॉड का. What is your fristy god now .txt. जो चलो यहाँ पे एडमिन ग्रुप था तो su admin password of admin. Okay, so let's use this one. Yes, we are admin now. So the first thing, sudo fnl to check the permission. Sorry, user admin may not run sudo on the local host. C. Let's use Frisitileak. The password of Frisitileak. So incorrect password. Okay, let's see. su और वो फिश के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी था. Yeah. Now we have got sudo -l
and we can see that this is a pseudo-right user. तो pseudo-right user कौन होते हैं? यहाँ पे देखते हैं. Exploiting pseudo-right user. If an attacker cannot directly get any root access by any of the other techniques, he might try to compromise any of the user who have pseudo access. Once he has access to any of the pseudo user, he can basically execute any command with the root privileges. Administrators might just allow the user to run a few commands with sudo, but not all of them. So over here you can see a classic example of using the pseudo-right user to find commands so another user can search for particular flags. See, sudo-l prints the commands which are allowed to run sudos. We can run find, cat and python. See here they have given example. But यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसने बता रखा है कि फ्रिस्टी को ऑल परमिशन है, बट उसको परमिशन है एक फाइल की जो कि है डॉकम फाइल, और ये कहाँ पे आपका वैर डायरेक्टरी में. Let's go to this directory. And we can see there is a docum directory. जो docum है ये देखो आपकी sudo executable files है जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे. Sudo executables. Let's see cross verification करने के लिए. Okay, the connection might be lost. Oppose IT shell.php.png. So let's use a Python command over here. So su Fristy God. The password of Fristy God was this. Yes. Who am I? I'm Fristy God. Okay. Sudo -l. So we're gonna go to this directory and gonna look this. So this was Docom was running as a root permission. Docom application is running as sudo executables file. So what I'm gonna do, I'm gonna check the history files. Hello. Yeah, who's this? वो रिवीजन करना है. मेरा मेन स्टूडेंट है यशस्वी कृष्णा. हाँ. वो लेट था और मेरे टाइम शेड्यूल हो गया था तो मैं डेमो ले रहा था फिर बाद में. तो वो तो कल भी नहीं आया था. वो आया नहीं था. तो so over here we can see the history file, the bash.history history file. So let's look at, and bash.history history file contains all the applications that are over there one by one. So you can see
it's going to show you all the recent command that was executing by the doccom command, because doccom command was sudo executable files. Sudo -u frisitileak, this was an application was running. So over here, we're going to copy this one and we're going to check if we can run this command. So what I'm going to do, I'm going to, yes. Okay. So what we're going to do, I'm going to add some commands with this, because this application was running a sudo user. So as an attacker, what I can do, I can write bin sh file, which is a shell file. So this was going to call in your entire network path. So this will call as a sudo user, because ये जो doccom file था वो आपके super user application से चल रहा था, और bin sh इसका particular file था. So let's copy this one and let's execute over here. And we can see we have root. Congratulations on beating the Frisitileak.rx file. So this was a proper technique that we can use it for the Frisitileak to be compromised. It's all about the encryption and the standard that we have to understand.